विभिन्न धर्मों से शामिल है और सेना में जात, धर्म, क्षेत्र के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय सेना कर्तव्य, वीरता और निष्पक्षता के प्रतीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप नाम, नमक, निशान के सिद्धांत का पालन करते हुए देश के विश्वास पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। अंत में मैं दोहराना चाहता हूं कि आने वालों वर्षों में ऊंचे दर्जे के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की मांग बढ़ती रहेगी। भारतीय सेना न सिर्फ आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि भविष्य की अपेक्षाओं को दूर करने भी सक्षम है। सेना दिवस के अवसर पर आज फिर हम सामूहिक रूप से अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद। भारतीय सेना की वर्दी 100 करोड़ जनता के विश्वास और सम्मान में बंधी निष्ठा की डोर से सिली है। तभी देश हमसे विशेष अपेक्षाएं रखता है। हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, हमारे वतन के वीरों का सम्मान है। After the inspiring speech from the Chief of the Army stops, the parade commander is moving. He is going to lead the complete parade. Major General Alok Kakkar, that's the chief. Arms and equipments have changed from swords to missiles, from slingshots to rifles, and from horses to tanks. But the spirit and courage of soldiers have remained unchanged. Men of our army have proved their mettle and have guarded our frontiers, be in the burning deserts or snow-clad mountains, fast-moving rivers or thick, impenetrable jungles. Nothing has proved to be a barrier for these gallant soldiers. That's the saluting dash. On the left of Chief is the Western Army Commander, Lieutenant R.P. Singh. See the parade commander Alok Kakkar. His vehicle will be the first to go past the saluting dash, and he will be followed by the next of the parade. परेड कमांडर का आदेश और चल पड़े हैं सिपाही अपने कर्तव्य पथ पर। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और इस पथ पर चल रहा है उनका गौरव, परिश्रम, तपस्या, अनुशासन, समर्पण, दक्षता, प्रतिबद्धता, संकल्प, सामूहिक भाव, सामूहिक चेतना, सब कुछ। मैदान परेड का हो, युद्ध का हो, प्रशिक्षण का हो, खेल का हो या आराधना का, यही भारतीय सेना के मूल हैं, सिद्धांत हैं, परंपरा है, संस्कृति और यही इतिहास है। सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया। और उनके पीछे जो भारतीय जिप्सियां हैं उनमें सवार हैं हमारे महामानव
वीरों के वीर माननीय परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता। Right on top of the parade, the Paramveer Chakra and Ashok Chakra awardees. Subedar Major Yogendra Singh Yadav, the youngest person ever to be awarded the PVC at the age of 19. Subedar Sanjay Kumar, Paramveer Chakra. They received the PVC for their gallantry at Tololing and Tiger Hills during the Kargil War of 1999. Ashok Chakra awardees: Lieutenant Colonel Jasram Singh, Lieutenant Colonel D. Sri Ram Kumar, Honorary Naib Subedar Shering Muttu. The Paramveer Chakra is India's highest military decoration, awarded for displaying distinguished acts of valor during wartime. Ashok Chakra is India's highest peacetime military decoration, awarded for valor, courageous action, or self-sacrifice away from the battlefield. It is the peacetime equivalent of the Paramveer Chakra. In fact, Paramveer Chakra is the second highest decorations in the country next to Bharat Ratna. So in the ceremonial functions, as per the protocol in the sitting plan, PVC will always come just next to Bharat Ratna, senior even with Padma Vibhushan. Yes, but the pride of the recipients and of the nation to see the recipients is very special. For these are the men who serve the nation selflessly, both in times of war and peace. That was the parade commander, Major General Alok Kakkar. The Paramveer Chakra awardees. Subedar Major Yogendra Singh Yadav, a great moment of pride for these soldiers and for the people who are present here. And that is the 61st Cavalry, the only active serving horse cavalry regiment in the world, led by Captain Dipanshu Shioran. So proud a warrior on so proud a back. The motto of the regiment is Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. अनुशासन क्या होता है, ये जानिए, सीखिए, समझिए इन वीरों से। सलामी मंच के निकट आता हुआ मेजर निखिल कुमार मौर्य के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट का दस्ता। इस रेजिमेंट की स्थापना 15 अप्रैल 1952 को हुई। इन पैराट्रूपर्स को विशेष अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सलामी देते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ पैराशूट रेजिमेंट का दस्ता जमीनी, समुद्र और आकाश मार्ग से दाखिल होकर दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं ये पैराट्रूपर्स। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, शत्रु जीत। And as you know, Sanjeev, they never walk. They're always on the double. And this is the Grenadiers Regiment. Major Anirudh Nair of 20th Battalion, he's on the command. They're moving ahead with passion, the epitome of valor and sacrifice.
these motivated men called grinders were selected to eliminate the enemy with a devastating effect. And they are known as the PVC Regiment. In 65, it was Company Quartermaster Havildar Abdul Hamid. In 71, it was Major Hoshiar Singh. And we have just seen Subedar Major Jogendra Singh Jadhav, who got it, as justly mentioned, during the Kargil operations, thoroughly operation. सलामी मंच की ओर अगला दस्ता सिख लाइट इन्फेंट्री का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर अंजुम गोरकर। कोर ऑफ सिख पायनियर्स के ये वंशज सज्जित हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और बर्निंग येलो रंग से, जो दर्शाता है इनका तेजस्वी और गौरवशाली इतिहास। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य देग देग फतेह, अर्थात शांति काल में समृद्धि, युद्ध में विजय, रेजिमेंट का युद्ध घोष है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वर्तमान सेनाध्यक्ष इसी रेजिमेंट से आते हैं। इसके पूर्व 2 सेनाध्यक्ष इस रेजिमेंट में दिए हैं। And this is the contingent of the valiant Kumaon Regiment, led by Rahul Singh Kataria of 16 Kumaon Regiment. Kumaon Regiment is the highest decorated regiment of the Indian Army. The regimental motto, Parakramo Vijayate, and the war cry, Kalika Mata Ki Jai. सलामी मंच के निकट आ रहा है कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता। नेतृत्व इंडियन आर्मी की 4th जनरेशन ऑफिसर कैप्टन तान्या शेरगिल कर रही हैं। कैप्टन तान्या शेरगिल आज की परेड एडजुटेंट भी हैं। इस कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। Next contingent is of the Army Air Defence Corps, led by Lieutenant Vivek Kumar More of the Army Air Defence Centre. The tranquil sky blue in the dress depicts a clear sky under the reins of the gunners, and the fiery red depicts the lethal and accurate firepower of the guns and missiles. Chief must be pleased with this air defence power. Regimental motto Akashe Shatrun Jahi, meaning kill the enemy in the sky. अगला दस्ता भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 86 आर्मर्ड रेजिमेंट के कप्तान सन्नी चहार। इस रेजिमेंट की स्थापना 1 मार्च 1977 को हुई थी और इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो। आने वाले समय में भारत का मुख्य टैंक रहेगा। And up next, the Infantry Combat Vehicle ICV BMP 2K, led by Lieutenant Vijay Pal Singh of 18 Mechanized Infantry. BMP is a high mobility infantry combat vehicle with lethal armament and state-of-the-art night fighting capabilities.
हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन आज इस सेना दिवस परेड पर। वो सैन्य उपकरण जिनसे दुश्मन कांपता है, दिल दहलता है उसका। सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है K9 वज्र T 155 mm 52 कैलिबर की स्वचालित हॉवित्जर। Next detachment of modern indigenous 155mm 45 caliber Dhanush gun system being displayed by 93 Field Regiment. The state of the art being led by Captain Mrigank Bharadwaj. The modern Dhanush gun system is an all-terrain that means plain, desert and snow-clad mountains. Futuristic equipment to bring down accurate and effective fire on the enemy. Motto of course is Sarvatra Ijjat o Iqbal. War cry Veluvam Veluvam Vetrikonde Saluvam. As you can see, Dhanush gun system on your picture screen. The artillery we have, and very closely following in the middle distance you can see the short span bridging system. Newly inducted short span bridging system commanded by Captain Adhiraj Pathak, son of Martyred Colonel Dhruv Jyoti Pathak of 234 Armored Engineer Regiment. Short span bridging system is a specialized equipment of bridging small gaps up to 4 meters. It's a wheeled vehicle mounted mechanically launched mobile bridging system. That is next one. 234 Armored Engineer Regiment, I must say, was a proud recipient of Theatre Honour Burma and the Battle Honour Kaliwa. They also took part in the 71 operation in which I was fortunate to be the part. Next is Sarvatra Bridging System. That is another Bengal Engineers Regiment, that is Captain Anmol Prit of 64 Assault Engineer Regiment. The Sarvatra Bridging specialized assault branch empowered by assault engineer units for bridging over dry and wet gaps. It's a little longish one than BLT. अगला दस्ता कोर ऑफ सिग्नल्स के परिवहनीय उपग्रह टर्मिनल DST वाहन का नेतृत्व मेजर शीना नैयर द्वारा किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय स्तर की 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता की शूटर भी है। कोर ऑफ सिग्नल्स का जय घोष है तीव्र चौकस। She is an international shooter trying to get a place for the Tokyo Olympics. And now closely followed by Akash Weapon System, commanded by Major Ankit Pahil of 128 AD Missile Regiment. Akash Weapon System is the first indigenously developed air defense system capable of firing short-range SAM surface-to-air missiles against enemy's aerial platform. Operationalization of the Akash Weapon System will make the enemy think twice before breathing our airspace, keeping our skies protected and safe against all kinds of aerial threat. In the inventory of Army as well as the Air Force, for the Land Army and for the Air Force.
indigenization of this particular system has given us a huge lead, in fact. Now the sports award winners are coming. Subedar Devendra Singh, Arjuna Awadi, participated in boxing at London Olympics, the last one in 2012. Closely followed by Subedar Anand and G. He won 3 gold medals in 100, 200 and 400. 7th CISM military games at Wuhan, China. A great sprinter and a middle distance runner. Then Naib Subedar Dushwan Chauhan got the bronze medal in rowing at Asian Games in 2018. Havildar Praveen Kumar won gold medal, 15th World Wushu Championship at Shanghai, China. Akash is in fact giving a lovely cover to all our great sportsmen. Havildar Thyem Dayendra Singh and Sepoy Chirag, closely followed by the parade second in command, Santosh Kumar Nair in the far distance. It is the commander who leads the parade and is second in command. Make sure that everybody is in. That's exactly what Santosh Kumar Nair is doing. Between those great sportsmen of the Indian Army who have done the country proud. करियप्पा परेड ग्राउंड जागृत हो उठा है वीरों के बढ़ते कदम और बैंड की धुन पर। आज सेना दिवस परेड समारोह और यहां ये सेना का मास बैंड, पाइप्स और ड्रम्स बैंड। मास बैंड का नेतृत्व संभाला है सूबेदार मेजर पर्वत सिंह बाला ने और धुन बजा रहे हैं ये कदम कदम बढ़ाए जा। Military band is the epitome of discipline. In the way they have a right wheel, they have a right turn in fact. Bands from Madras Regimental Centre, Bengal Engineer Group, Madras Engineering Group, they're all in unison absolutely. They have got a long program. They will be present for the Republic Day and thereafter grand finale at Beating Retreat. Now we can see the motorcycle display team of the Corps of Military Police, popularly known as Swet Ashwa.
सेना पुलिस कोर की टीम जिसका नेतृत्व संभाला है सूबेदार N.K. तिवारी ने सलामी मंच के सामने से। And that precise balance on the pinnacle of the ladder, Naib Subedar Sukhdev Singh. फ्लाइंग फिश फॉर्मेशन और इसका नेतृत्व संभाला है नायक MD बाबाजानी और नायक फकीरप्पा गौदर और उनकी टीम ने। And that is the double bar formation performed by Havildar Irappa Dundi and his team. And the Scorpion formation being performed by Havildar Hemant Kumar N and his team. उसके बाद सुदर्शन चक्र आपने देखा, हवलदार शीशपाल और नायक शीश कृष्ण और उनकी टीम। And for the denouement, we have the pyramid formation comprising Havildar Sukhjinder Singh and 49 members of the Corps of Military Police. और दिल थाम कर बैठिए, नायक गायकवाड़ नीलेश और नायक संतोष MK व्हीलिंग करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, दर्शक इसे करने की कोशिश न करें। But it is a delight to watch this spectacular performance by the daredevils of the Shwet Ashwa team. What a performance today, Sanjeev. बहुत शानदार प्रदर्शन और अब तैयार हो जाइए हमारे इन वीर सैनिकों के युद्ध कौशल और रण कौशल का प्रदर्शन देखने के लिए। और अब कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन, युद्ध क्षेत्र का एक संक्षिप्त प्रदर्शन होगा यहाँ पर। एक प्रयास इस परेड ग्राउंड के सीमित दायरे, सीमित समय के बीच, क्योंकि वास्तविक युद्ध भूमि की परिस्थितियों को यहाँ दिखाना संभव नहीं है, किंतु फिर भी जितना संभव हो सकता है उतना यहाँ दर्शाने का एक प्रयास किया जाएगा। Chief of the Army Staff meeting all the dignitaries. He will also take his appointed place and watch the combat demonstration. Battle inoculated. They will all be battle inoculated. That's Ved Malik and his wife, Mrs. Ranjana Malik. That is General J.J. Singh. And next to him was N.C. Vij, retired Air Chief. Air Chief should be very pleased in seeing the performance of the army which he has just taken over. The training and the readiness should be absolutely top class. We will see the combat demo, the most exciting part of this morning parade. कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन, इसका प्रारंभ होगा इतिहास की एक झलक से, जब सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपनी भुजाओं के बल एवं तलवारों से ही युद्ध किया करते थे। आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ घुड़सवार सैनिक, अश्वबल, That is, Manoj, the good old days, the 19th century soldiers, the infantrymen coming and the cavalry. They will be in conjunction. There's the infantry with a long bayonet with that. पैदल सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है
और घुड़सवार सैनिक पोजीशन लेने को जा रहे हैं अपनी, और इसके तत्पश्चात आप बाद में देखेंगे आधुनिक युद्ध कौशल, युद्ध कला। लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये देखिए, उन्होंने हमले की तैयारी के लिए तत्पर, और ये धावा। सबसे पहले कैवलरी चार्ज तोप की गर्जना के साथ। The artillery fire is on, and that is a cavalry charge. And finally, the ground will be held by the infantry, and that is infantry, the bayonet charge. और ये पैदल सैनिकों का धावा। तू वस्त्र उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, तू सिंह की दहाड़ कर, तू शंख की पुकार कर, तू सबसे पहले वार कर। That is the Ghop Nikal. They literally practice on the enemy. That is the ruthless portion. It has to be done for the protection of the country. और अब इतिहास से वर्तमान की ओर आज के आधुनिक युद्ध कला का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में शत्रु के एडवांस पोजीशन पर कब्जा करने की ड्रिल दिखाई जाएगी। शत्रु की गाड़ियां एवं टैंकों को दर्शाने के लिए आप ध्यान दें कि उन पर लाल झंडा लगा होगा। Multi-barrel rocket launchers being placed, and they can really create havoc in the enemy field. And at a time, 14 to 6, 240 rockets can be spewed out from there. गन पोजीशन ऑफिसर्स ने आरटी गन डिप्लॉय करने का आदेश दे दिया है, और सबसे पहले ये आप देख रहे हैं 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पोजीशन लेते हुए ये 40 किलोमीटर दूर तक शत्रु पर प्रहार कर उसे नष्ट करके बर्बाद कर सकते हैं। और उसी के पीछे Both guns are being brought. The GPO will give the order of the guns are placed in positions. किले की दीवार के साथ साथ आप देखेंगे 3 130 mm गन्स एवं 3 155 mm बोफोर्स, जिसने कारगिल के युद्ध में न सिर्फ शत्रु बल्कि पर्वतों को भी ध्वस्त करके रख दिया। 155 mm howitzer is the main guns for our medium guns for our artillery, and the other one is, now it used to be medium gun 130, now it can be considered as a field gun 130 caliber. इसी के साथ अन्य कई टुकड़ियां एक साथ एक सम्मिलित सामूहिक कार्रवाई करते हुए एक व्यू रचना करते हुए। गन पोजीशन ऑफिसर टारगेट संबंधित डेटा एवं आदेश देते हुए। This data is provided by the OPs, the ground OPs, and we might soon see some air OPs also providing the data for the accuracy of the fire. आप देख सकते हैं ऊपर 2 चीता हेलीकॉप्टर्स, ये ऊपर से टारगेट पर पड़ रहे फायर पर नजर रखकर आवश्यक करेक्शंस देते हुए एरियल ऑब्जर्वेशन पोस्ट की भूमिका में। It's tremendous coordinations. ये है That चीता। is- the observation post officer is there. He will watch, and then he will direct the fire so that the maximum effort can be there. He's raising the hand, and now the guns being loaded, and they will fire. After the first round of salvo, the first round of fire, they will give the necessary corrections. Go right, go left, short or add. ये प्रहार था, लो सहो हमारा वार प्रचंड, कर देंगे तुम्हें हम खंड खंड, हम पस्त करके रख देंगे, हम ध्वस्त करके रख देंगे। Fire was, so to say, it was accurate, it seems. So it brings a panic in the enemy camp. These are known as the pre-attack bombardment, or the preliminary bombardment.
और अब now you will see the investment and isolation force coming. और अब युद्ध